Welcome to M Public School on PPT program. Today I am going to represent a geography chapter of Standard 7, lesson number 1, our environment. So let's start the chapter. Why we learn this chapter? After learning this chapter, what we will gain? The main highlights of this chapter is realms of the earth, means पृथ्वी का एहसास, पृथ्वी से हम क्या एहसास लेते हैं. Then biodiversity. Biodiversity means जैव विविधता. Then we learn from this chapter ecosystem. Ecosystem means it is an area where living things and non-living things interact with one another. Next, we learn the dynamism of the environment, means the rapid change of the environment. Now come to the topic. Place, people, things and nature that surround any living organism is called its environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. Means the things we are watching around us, everything what we are watching around us, that is called environment. Environment is divided into two parts. One is natural environment, another one is human-made environment. Natural environment means the environment made by nature. Then that natural environment divided into two parts. One is biotic, another is abiotic. Biotic means the environment made by living components. This is called, examples are plants, animals and other all microorganisms. Abiotic components means the environment made by non-living things. Example, water, air, soil, rocks and also temperature, humidity, etc. Then we learn the another part of environment, human-made environment. Increasing human use as forced to modify and at times even destroy the natural environment. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers for the good produced. The car funds pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories. Human dwellings have changed from a hut to skyscrapers. Villages have developed into towns, cities and megacities. All these are referred to as human-made environments. That means environment made by human is called human-made environment. Examples are cars, many type of vehicles, aeroplanes, trains, ships, boats, mills, factories, skyscrapers, etc. Those are goes to human-made environment. Now we learn realms of the earth, means पृथ्वी का एहसास. When we study the complete environment of the earth, we find that all the three realms of the earth, lithosphere, atmosphere and hydrosphere, are found either in combination or separately but not independently at any spot where the living beings are found. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support life. Plant and animal kingdom together make biosphere, or the living world. Earth is the home to all living creatures, is biological context.
This can be termed as environment in totality. Means in realms of the earth we found three realms of the earth. One is lithosphere, another is atmosphere, and last one is hydrosphere. The combination of these three is called biosphere. So now we learn what is lithosphere, what is atmosphere, and what is hydrosphere. In next chapter we learn vastly about lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Now we go to teach you about lithosphere, what is lithosphere, and what we learn from this lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals. The earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. The crust is covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms, mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. The rocks of the crust come from the interior of the earth and are distributed and deposited in layers. Rocks are aggregates of minerals and they help to support life. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also the main source of mineral wealth, which is the raw material for a wide variety of industrial products for human use. So now I will teach you what is lithosphere. The hard top layer of the अर्थ, द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो टॉप लेयर है, जहाँ पर हम खड़े होते हैं, जहाँ पर हम अपना बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ पर हम अपना फार्म हाउस बनाते हैं, जहाँ पे हमारा स्कूल बना है, दैट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। दैट टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। उसी टॉप लेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, व्हाट इज द deep of lithosphere? The deep of the lithosphere is from top to 35 km. In continental mass, continental mass means our continent is Asia continent, Europe, that is continent, continental mass। continental mass में उसका deep है 35 km and ocean floor में उसका deep है 5 km। So हम अपना जो फॉरेस्ट देख रहे हैं वो भी वही लिथोस्फीयर में जा रहा है, वो क्रस्ट में जा रहा है। हमारा जो ग्रास लैंड है फॉर ग्रेजिंग ऑफ काउज, जो काउज ग्रेजिंग के लिए जो ग्रास लैंड है, हमारा जो लैंड में हम एग्रीकल्चर करते हैं एंड हम जो सेटलमेंट होते हैं, मतलब हम जो बिल्डिंग बनाते हैं रहने के लिए और इंडस्ट्री बनाते हैं कुछ करने के लिए, एंड जो माउंटेन्स है वहाँ से हमको क्या मिलता है, मिनरल्स। फ्रॉम मिनरल्स वी कंटिन्यू आवर इंडस्ट्री। वो मिनरल्स वही क्रस्ट से ही हमको मिलता है। सो क्रस्ट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। सो विदाउट क्रस्ट वी कैन नॉट लिव, द ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट डेवलप। Now we learn hydrosphere. The domain of water is referred to as hydrosphere. On Earth, 97% of water exists chiefly in oceans. Oceans supply water vapor to the atmosphere through evaporation. In the atmosphere, water vapor condenses to fall back on Earth in the form of precipitation. This precipitation makes life possible on land.
Water is found in oceans, rivers, lakes, ponds, glaciers, and in the atmosphere in the form of vapor. Without water, life cannot be found on Earth. So water is essential for all living organisms. So what is hydrosphere? All the water bodies on the Earth's surface and water over the Earth's surface, that is called hydrosphere. That means हमारा अर्थ में जितना वाटर बॉडीज है एंड ओवर द अर्थ सरफेस मीन्स क्लाउड में जितना वाटर है, दैट इज कॉल्ड ऑल टोटल को मिलाकर हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. दैट मीन्स द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्फीयर आर ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, ponds and clouds, all mixingly form hydrosphere. हमारा अर्थ का 97% surface covered with water in the form of oceans and seas. So oceans and seas सप्लाई करता है वाटर वेपर टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को एवापोरेशन होकर ओशंस एंड सी से वाटर एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर को चला जाता है. देन ऑन एटमॉस्फेयर वहां पर कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट होकर नीचे फिर गिरता है. कहां पर गिरता है? अर्थ के ऊपर गिरता है. दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन और रेन फॉलिंग. This precipitation makes life possible on land. Due to that precipitation, water again fall on many rivers, ponds and lakes. And due to that precipitation, life is continuing. So, continuing the environment, proper environment and continuing our life, hydrosphere is mostly important. Then come to atmosphere. The thin layer of air that surrounds the earth is called the atmosphere. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Air is a mixture of many gases, chiefly nitrogen about 78.1% by volume, oxygen 20.9%, carbon dioxide 0.03% and other gases 0.97%. Dust and water vapor. Atmosphere exists in several layers. Each layer performs a different function. For example, the ozone layer protects life from the harmful ultraviolet rays and scorching heat of the sun. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Atmosphere also helps to form precipitation from water vapor rising from the oceans. So what is atmosphere? The thin layer of gases surround the earth. That means अर्थ का चारों तरफ एक थीन लेयर का गैसेस है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर contains mainly nitrogen gas, oxygen, carbon dioxide and other gases, also dust and water vapor. So nitrogen in volume 78.1%, oxygen 20.9% and carbon dioxide 0.03%. Other gases 0.97% and dust and water vapors. Atmosphere exist different layers. Different atmosphere में different layer होता है. वो layer, each layer perform different actions. Such as one example, that is ozone layer. Ozone layer का काम क्या है? Ozone layer protects us. The ultraviolet ray comes from sun. Sun से जो ultraviolet ray आता है उसको वो हमारे पास आने नहीं देता. एंड सन का जो एक्स्ट्रा हीट आता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है. हमको थोड़ा एक्स्ट्रा हीट को ऑब्जर्व करके हमको जितना हीट का जरूरत होता है वो इतना सन रे हमारे पास
छोड़ देता है। दैट इज द वर्क ऑफ ओजोन लेयर। सो डिफरेंट लेयर, जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, उस डिफरेंट लेयर का डिफरेंट वर्क है। तुम जब ऊपर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो डिफरेंट लेयर्स का क्या क्या काम है उसके बारे में वास्टली आपको नॉलेज मिल जाएगा। ऑल्सो एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन होता है। जब वाटर एवापोरेशन होता है, एटमॉस्फेयर को चला जाता है, एवापोरेट होकर गैस होकर, वाटर गैस होकर एटमॉस्फेयर को चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन होता है। कंडेंसेशन, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर वहाँ प्रेसिपिटेशन के जरिए नीचे गिरता है, मतलब रेन ड्रॉप होकर नीचे गिरता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। सो इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, हाउ वाटर एवापोरेट एंड कैन नॉट बी प्रेसिपिटेट हियर, मतलब रेनफॉल होकर नहीं गिर सकता है, नहीं गिरेगा। सो एटमॉस्फेयर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। देन वी लर्न बायोस्फीयर। The biosphere includes parts of the three realms: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. In other parts, there is no life. Biosphere is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. In other words, plant and animals kingdoms together make biosphere on the living world. So what is biosphere? Biosphere means अर्थ का जो थ्री रियलेंस है, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उन सब को मिलाकर बायोस्फीयर एग्जिस्ट होता है। सो व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एक ही जगह पर इंटरेक्ट होता है, वहां उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं? प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर बायोस्फीयर बनाते हैं। इन दिस वर्ल्ड में बायोस्फीयर बनाते हैं। देन इकोसिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. An ecosystem for a given area is the whole biotic environment, such as plants, animals, microorganisms in that given area plus its abiotic environment to interact with. Thus, the relation between the different organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings in a given area form an ecosystem of that area. There could be an ecosystem of a small pond, lake, river or ocean as well as of a grassland, a forest, a desert or a mountain. The tropical rainforest is an example of a very large ecosystem. So what is ecosystem? Ecosystem means हम plants and animals and plants जिस जगह पर रहते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब मीन्स जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग मीन्स जहां पर वो रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जहां पर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग्स। सो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स उस इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम डिपेंड करता है बायोटिक एनवायरनमेंट साइमल्टेनियसली अबायोटिक एनवायरनमेंट के ऊपर। देन वी लर्न biodiversity. Biodiversity or biological diversity includes the vast variety of organisms that inhabit the earth, wild plants and animals, microorganisms, domestic animals, cultivated plants and even seeds. In other words,
Biodiversity is the variety and variability of life on Earth. More than 10 million species of plants and animals exist on Earth. India alone has about 47,000 species of plants and 89,000 species of animals. It is one of the 10 mega diversity centers in the world. Tropical rainforests of the world are known for their mega biodiversity. हमारा अर्थ में 10 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्जिस्ट ऑन अर्थ. हमारा अर्थ में 10 मिलियन का प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं. तो जो वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोमेस्टिक एनिमल्स, वो सब जो हमारा अर्थ में हैबिट करते हैं, उस सबको मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बनता है. तो हमारा जो वर्ल्ड में 10 मिलियन स्पेसीज का प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, उनमें से 89,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 47,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स हमारा इंडिया में मिलते हैं. सो इट इज इंडिया इज कॉल्ड 10 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए इंडिया को 10 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन फॉर देयर मेगा डाइवर्सिटी. हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो जाना जाता है एक मेगा बायोडाइवर्सिटी के मेगा बायोडाइवर्सिटी मान्यता उसको मिला है. द डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट. द फिजिकल and biological elements in the environment are dynamic in nature. They interact with one another. Any change in the physical environment brings about a change in the biological environment and vice versa. That means changes take place slowly or suddenly in the nature of landforms. Sudden changes are more noticeable. The earth's surface and landforms undergo changes continuously. The distribution of continents and oceans has also varied during the long history of hundreds of millions of years. The lofty Himalayas began forming some 60 million years ago from sediments that lay at the bottom of an ancient sea in that region. Changes in environment were responsible for the evolution of human beings about 1 million years ago. So what is the dynamism of the environment? Means the dynamism of the environment means the rapid or slow change of the environment. That may be biological elements or physical elements. Biological element means living things. Physical element means non-living things. वो फिजिकल एलिमेंट्स हो और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हो, उनका रैपिड चेंज और स्लो चेंज, उसको हम बोलते हैं द डायनामिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट. Factory chimneys emit a range of noxious fumes in the air. Vehicles emit poisonous gases. Coal-fired power stations emit harmful gases. Aircraft burn off fuel and add gases to the atmosphere. All these gases
cause acid rain and global warming. Rivers are polluted by industrial waste and farming chemicals. Oil spills from tankers kill seabirds and other creatures. Nuclear power stations dump radioactive liquid waste straight into the sea. Nuclear bomb blasts fill the environment with radioactive dust, leaving many areas unfit to live for centuries. All these environmental changes pose a serious threat to the very survival of humans themselves on Earth. The human actions have caused the imbalance in our environment. The implications of this imbalance are many. For example, global warming, uncertainty in the beginning and end of season, and rains. Our environment is thus in danger. A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way because we are dependent on the environment for our food, water, air, fibers, medicine, shelter, raw materials, soil and energy. फैक्ट्री या चिमनी से जो हार्मफुल गैस निकलता है, व्हीकल चलने के बाद जो पॉइजनस गैस निकलता है, कोल फायर होने पावर स्टेशन में हम कोल फायरिंग करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेट के लिए हम कोल फायरिंग करके पावर स्टेशन में कोल फायरिंग करते हैं। और कोल फायरिंग से जो हार्मफुल गैसेस निकलता है, और हम क्या करते हैं ना, एरोप्लेन को चलाने के लिए हम फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालने से जो गैस निकलता है उससे क्या होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग होता है एंड एसिड रेन भी होता है। इससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है एंड एसिड रेनिंग होता है। उससे क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं ना, केमिकल्स फार्मिंग करते हैं। हमारा जो फार्मर्स अपने लैंड में केमिकल्स डालते हैं, वो जो केमिकल डालते हैं उस जब रेनी सीजन में रेन ड्रॉप्स होता है, वो रेन के जरिए वो केमिकल्स जाकर ओशन एंड सी में, रिवर के जरिए ओशन एंड सी में गिरता है। उससे क्या होता है, हमारा रिवर का वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है एंड वहाँ पर जो क्रिएचर्स रहते हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं ओशन में एंड सीज में, उनका डेथ हो जाता है। उससे एनवायरनमेंट डायनामिज्म हो जाता है, इनबैलेंस होकर डायनामिज्म होता है। तो हम जो काम करते हैं हमारा सुखाली के लिए, वो हमारा दुखाली बन जाता है। इसीलिए वी मस्ट मेक बैलेंस इन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड natural beings. For our wrong works, many type of imbalances are occur. Just example, global warming, uncertainty beginning and ending of seasons and rains. रेनी सीजन में नहीं ना होकर समर सीजन में होता है। दिस ईयर यू जस्ट वॉच पास्ट ईयर इन समर सीजन रेन continually raining. Rain is continually raining, just like rainy season. In rainy season, we feel very hot, just like summer season. Why? Because our imbalance work. We make our environment imbalance due to above reasons. हम अपना पावर प्लांट चलाते हैं, रेडियो पावर प्लांट चलाते हैं, उससे जो रेडियो एक्टिव निकलता है हम इसको क्या करते हैं ना, सी एंड ओशन में डंप कर देते हैं। इससे इनबैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट। सो हमारा एनवायरनमेंट से फूड, वाटर, एयर, फाइबर्स, मेडिसिन, शेल्टर, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, सॉइल एंड एनर्जी, ये सब मिलता है हमारा एनवायरनमेंट से। सो दैट इज आवर ड्यूटी to make perfect balance between natural and human environment. Human environment and natural environment में
जितना बैलेंस जरूरी है वो उतना बैलेंस हमको रखना है. We must take the balance between natural environment and human environment. अगर हम natural environment and human environment में बैलेंस नहीं रखेंगे तो एक दिन आएगा जब ह्यूमन नहीं रहेंगे. If we will not create the balance between human and human environment and natural environment, time will come no human and no living being will exist in this earth, just like our dinosaur. That is whole about on the topic our environment. Now I am ending this PowerPoint, and how you learn or any problem you found, you just tell me through my WhatsApp. Okay, thank you, and I will do the question answer just in next PowerPoint. Okay, thank you.